और कितना भागेंगे? ये प्रश्न है सभी हिंदुओं से, सभी सनातनियों से जो पलायन कर रहे हैं, अपने अपने घरों से भाग रहे हैं, सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर कितना भागेंगे, कहाँ तक भागेंगे? ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है। आज का ये जो खबर है ये हुसैनपुर कला गांव से है, जहां जैन समुदाय पलायन कर रहा है और वहां से जैन मंदिर में स्थापित चंद्र प्रभु जी की मूर्ति को भी स्थानांतरित कर रहा है, क्योंकि अब उस गांव में कोई जैन बचा ही नहीं। तो आखिर उस जैन मंदिर में उन चंद्र प्रभु जी की मूर्ति की पूजा कौन करेगा? वहाँ वो बचे हैं जो बुत परस्ती को हराम मानते हैं, जो मूर्ति पूजा को हराम मानते हैं। अगर वहाँ पर ये मूर्ति और ये मंदिर छोड़ा गया तो इसका क्या होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आज की ये खबर है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर की बुढ़ाना तहसील में एक छोटा सा गांव है हुसैनपुर कला। यह गांव किसी ज़माने में व्यापार का केंद्र रहा करता था, इसलिए वहां पर व्यापार करने वाले जैन समुदाय की संख्या ज़्यादा थी। समय बदलता गया, हुसैनपुर कला गांव में धीरे धीरे मुस्लिम आबादी बढ़ती गई, इसके साथ ही दहशत भी बढ़ती गई। पिछले 10 वर्षों में दहशत की अनेक घटनाएं सामने आती रही और उन घटनाओं के कारण वहां से व्यावसायिक काम करने वाले जैन समुदाय का पलायन चालू रहा और अब वहां के चंद्र प्रभु जी की मूर्ति को भी स्थापित किया जा रहा है। ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है। अब इस गांव में जैन समुदाय की संख्या बची ही नहीं, तो मंदिर की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं बचा। बीच में एक पुजारी रखा था, वह भी ठीक से देखभाल नहीं कर पाता था। इसलिए जैन समुदाय ने निर्णय लिया कि चंद्र प्रभु भगवान की प्राचीन मूर्ति को वह तहसील के मुख्यालय बुढ़ाना में एक मंदिर में स्थानांतरित करेंगे। अब आप सोचिए कि आखिर ये हो क्या रहा है? आखिर क्यों हिंदू भाग रहे हैं, क्यों हिंदू स्थानांतरित हो रहे हैं? इसमें गलती भी कहीं ना कहीं क्या हिंदू समाज की नहीं है, जो बिना सोचे समझे उन लोगों को अपने बीच बसा लेता है जो जनसांख्यिकी बदलकर उनके लिए ही भयानक बन जाते हैं, जो माहौल ख़राब करते हैं, हमारी बच्चियों के लिए एक गंदा माहौल क्रिएट करते हैं, उनके साथ गलत करते हैं। यहाँ भी वही हो रहा था, इसलिए जैन समुदाय को भागना पड़ा। और ये केवल एक जगह का किस्सा नहीं है, ऐसा देश के जगह जगह हर जगह हो रहा है। जयपुर में भी हाल ही में पलायन का एक खबर सामने आई थी। तो सभी हिंदुओं को अब समझदार बनना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। आपको एक बहुत ही विशेष वीडियो आगे हम दिखाना चाहते हैं, जो कि एक महिला ने किस प्रकार मुसलमानों को लेकर बहुत ही बेहतरीन टिप्पणी की उस सवाल पर, जब एक मुस्लिम लड़की ने उनसे एक कार्यक्रम में पूछा कि मुसलमान पर अन्याय की बात उठाई और अधिकतर मुसलमान तो अच्छे होते हैं ऐसा कहा, तो उन महिला ने जो जवाब दिया वो सभी को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए और आगे जीवन में किस प्रकार रहना है, क्या करना है, इस पर ध्यान देना होगा। अन्यथा जैसा आज ये जैन समुदाय कर रहा है, जैसा जयपुर में हो रहा है, जैसा कश्मीर में हुआ, बंगाल में हुआ, देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, समझदारी दिखाएं, ताकि आप अपना जीवन चैन से ढंग से जी सकें। देखिए वीडियो और समझिए कि सारे मुस्लिम बुरे नहीं होते, सभी मुस्लिम एक जैसे नहीं होते, अधिकतर अच्छे होते हैं। लेकिन का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। ध्यान से देखें, समझें और अधिक से अधिक शेयर करें। Assalamu alaikum. Peace to you all. My name is Saba Ahmed. I'm a law student at American University. I am here to ask you a simple question. I know that we portray Islam and all Muslims as bad, but there's 1.8 billion Muslim followers of Islam. We have 8 million plus Muslim Americans in this country, and I don't see them represented here. But my question is, how can we fight an ideological war with weapons? How can we ever end this war? The jihadist ideology that you talk about, it's an ideology. How can you ever win this thing if you don't address it ideologically? Great question. I am so glad you're here, and I am so glad you brought that up because it gives us an opportunity to answer.
What I find so amazing is since the beginning of this panel, which we are here about Benghazi attack against our people, not one person mentioned Muslims. We are here against Islam, or we're launching war against Muslims. We are here to discuss how 4 Americans died and what our government is doing. We were not here to bash Muslims. You were the one who brought up the issue about most Muslims, not us. And since you brought it up, allow me to elaborate with my answer. There are 1.2 billion Muslims in the world today. Of course, not all of them are radicals. The majority of them are peaceful people. The radicals are estimated to be between 15 to 25%, according to all intelligence services around the world. That leaves 75% of them peaceful people. But when you look at 15 to 25% of the world Muslim population, you're looking at 180 million to 300 million people dedicated to the destruction of Western civilization. That is as big of the United States. So why should we worry about the radicals, 15 to 25%? Because it is the radicals that kill. Because it is the radicals that behead and massacre. When you look throughout history, when you look at all the lessons of history, most Germans were peaceful. Yet the Nazis drove the agenda. And as a result, 60 million people died. Almost 14 million in concentration camps. 6 million were Jews. The peaceful majority were irrelevant. When you look at Russia, most Russians were peaceful as well. Yet the Russians were able to kill 20 million people. The peaceful majority were irrelevant. When you look at China, for example, most Chinese were peaceful as well. Yet the Chinese were able to kill 70 million people. The peaceful majority were irrelevant. When you look at Japan prior to World War II, most Japanese were peaceful as well. Yet Japan was able to butcher its way across Southeast Asia, killing 12 million people, mostly killed with bayonets and shovels. The peaceful majority were irrelevant. On September 11th in the United States, we had 2.3 million Arab Muslims living in the United States. It took 19 hijackers, 19 radicals to bring America down to its knees, destroy the World Trade Center, attack the Pentagon, and kill almost 3,000 Americans that day. The peaceful majority were irrelevant. So for all our powers of reasons and us talking about moderate and peaceful Muslims, I'm glad you're here. But where are the others speaking out? And since you are the only Muslim representative, save the applause till the end. Thank you. Thank you. And since you're the only Muslim representative in here, you took the limelight instead of speaking about why our government, and I assume, are you an American? You're an American citizen. So as an American citizen, you sat in this room and instead of standing up and saying a question or asking something about our 4 Americans that died and what our government is doing to correct the problem, you stood there to make a point about peaceful, moderate Muslims. I wish you brought 10 with you to question about how we can hold our government responsible. It is time we take political correctness and throw it in the garbage where it belongs and start calling it fair.